World T20. If we just have a quick look at the match summary of the game that has just finished between India and Afghanistan, it will be confirmed that India have indeed found some form at long last. Third game of the tournament after 2 bad losses. They finally won their first match, the highest score of the tournament first at 210 for 2. Some great batting from Rohit Sharma and KL Rahul to start things off, and then Afghanistan always up against it, finishing on 144 for 7. So India victors by 66. Now the impact of that game, of course, gives India their first points. Nonetheless, they are still relying on other people, other teams, if they are going to get up to number 2 spot in this group, in Group 2, and therefore have a chance of playing a semi-final. As it stands, Pakistan, 4 from 4, have 8 points. Afghanistan still on 4, still with a very good net run rate. New Zealand also on 4 now, and plus in terms of that run rate as well. India just into the plus, their first points on 2. Their maximum points, though, are 6. And, of course, New Zealand have 2 matches left. So if they can beat their opposition in those final 2 games, which includes Afghanistan in the last game, well, then New Zealand, of course, will be up on 8. Pakistan likely to be 10 by the time they're finished. And that will be Pakistan and New Zealand qualifying for the semi-finals. But it does remain open. And in terms of India's side, I mean, where have they been? They've suddenly sort of woken up, it seems. Yeah, and that too, batting first. They have had trouble batting first before, but this time this looked like a completely different batting unit, the one we are more used to when we talk about India. And Afghanistan will be definitely very, very disappointed, because with this kind of thrashing, 66 runs defeat, their chances for the World Cup will be reduced, because even if they win against Afghanistan, still India can catch up with points and net run rate. Well, yeah, just to clarify that one, New Zealand have Namibia and Afghanistan still to play, and therefore one would assume yeah. they would beat Namibia. And on the current form, on today's form, of course, you'd assume also, and yeah, let's face it, normally speaking, they'd beat Afghanistan too. So if things go as they should, as we expect, and as New Zealand would expect, that gets them in, because that gets them up to 8 points, and that means they cannot be caught by India. Yes, and for that game, let's see if Mujib can get fit by then, because I do think that was a big difference today also. With the new ball, they were not effective. They did not look like Afghanistan bowling attack that we have seen. So if Mujib can come back, then again it can be a better unit. Well, it does seem strange, I have to say, that they started with 2 spinners on a fresh track, on a track where we've seen in the last couple of days pace do well, especially with the new India, ball. and especially when India has been struggling with pace. Yeah. Anyway, have a go at the left wing. Say good evening to them. Wake them up. जी राशिद भाई, आना तो सबसे पहले आपके पास ही पड़ेगा. सवाल की जरूरत नहीं है, जवाब हाजिर है. जवाब ये हाजिर है कि टॉस जीत के मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिस्टेक की नबी ने, क्योंकि इंडियन बैटिंग अंडर प्रेशर थी, उनको चेज कराना चाहिए था. क्योंकि पहले बैटिंग देखे थोड़ा ब्रीदिंग मिल गया उनको, बॉलिंग इतनी अच्छी जगह नहीं हुई, मुजीब नहीं थे और वो आराम से शुरू में खेले, और इनको एक बार टाइम मिल जाए केएल राहुल को और रोहित को, फिर तो आप 200 का पट्टा आपको पता ये लगना, और लगाया उन्होंने. तो अगर तो पहले खुद बैटिंग कर ले, जितने भी करते हैं, लेकिन अगर 150 रन करती अफगानिस्तान या 140 भी करती, इतनी अंडर प्रेशर उनकी टीम खेल रही थी, मैंने आज तक नहीं देखा इतनी अंडर प्रेशर 2 मैचेस जो खेली है. तो एक होप थी अफगानिस्तान को, शायद हो सकता है कि अच्छा मैच हो जाता, लेकिन जब वो 200 क्रॉस हुए हैं तो कुछ चांस ही नहीं था. ये भी 144 भी ज़्यादा कर दिया इन्होंने. ये टीम ऐसी क्लफ कर जाती है, वो किया है इन्होंने. नबी थोड़ा अच्छा अपने लिए थोड़ा सा खेल गया, तो ये 144 हो गए. तो क्या है, प्लस में आ गई इंडिया की भी. अब सबकी नज़रें न्यूजीलैंड के मैच की होगी. हालांकि न्यूजीलैंड जीत जाएगा मैच, लेकिन क्या एक हाइप क्रिएट करनी है हमें वर्ल्ड कप की. हम यहाँ पे भी बोलेंगे कि अफगानिस्तान अगर हरा देगा तो इंडिया के चांसेस हो जाएंगे, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि न्यूजीलैंड हार जाए. जिसने बड़ी इंडिया की टीम को हरा दिया, तो वो अफगानिस्तान से हारने वाली नहीं. उनकी प्लानिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी है. जो दोनों स्पिन से आज स्टार्ट किया अफगानिस्तान, जब इंडिया जो है वो फास्ट बॉलर्स पे स्ट्रगल कर रहा है. दोनों मैचेस में हमने देखा, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी. क्या आपको लगता है कि इनका पेस अटैक इतना अच्छा नहीं है कि ये स्पिन से जाते हैं? ये स्ट्रैटेजी
कैसी लगी आप? से और हामिद हसन तो अच्छे न्यू बॉल तो अच्छी करते हैं, यहाँ पे करानी चाहिए तो उनको रात में ये शाम को बॉल अच्छी स्विंग होती है। मेरे ख्याल से मिस्टेक की नबी ने और दो मिस्टेक की, एक ओपनिंग जो करवाई, बॉलिंग करवाई, दूसरा टॉस जीत के जो बॉलिंग पहले की है, तो नजर आ रहा है कि बड़ी मिस्टेक्स हैं और इस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। शुरू हो गया था उसी वक्त जब मैच स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें आपको सबको पता है कि अफगानिस्तान पहले खुद बैटिंग करती है, उसके बाद वो ट्राई करती है अपनी बॉलिंग से कि उनके पास जो स्पिनर हैं या फास्ट बॉलर हैं, स्प्रिट मिसिंग थी जो अफगानिस्तान मशहूर है एसोसिएट तक वर्ल्ड से लेके वर्ल्ड कप तक। अफगानिस्तान की एक चीज जो जुदा है सबसे, वो टीम स्प्रिट है। आज छोड़ के आए थे वो इस होटल में शायद। अजहर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? स्पिरिट उन्होंने तो कह दिया, होटल में छोड़ आए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद भाई कि ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि हमने जिस वक्त बात की कि अफगानिस्तान की टीम को आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा स्पिरिट नज़र आती है, डिज़ायर नज़र आती है कि वो जीतना चाहते हैं। मतलब आप पिछले मैचेस देख लें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह का उनका एटीट्यूड था ऑन द फील्ड, वो आप देखें आज वो नज़र नहीं आया। और दूसरी चीज़, आप खुद ये बात बोल रहे हो कि यार हम पहले बैटिंग करेंगे, जैसे पहले भी कहा था, आज तो इतना बॉल गीला भी नहीं हुआ, उस दिन ज़्यादा ड्यू थी। और आज अगर आप देखें वेदर रिपोर्ट देखें तो उसमें ड्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर आपने ये किया कि बॉलिंग कर ली, और फिर आपने चले बॉलिंग कर ली ऑन अ ग्रासी पिच या जो भी था, और फिर आपने स्पिनर से स्टार्ट किया। और स्पिनर भी वो ठीक है, नबी खुद करते हैं, एक आधा ओवर करते हैं, फिर आप ऐसे लड़के को लेके आए जो अपना पहला मैच टूर्नामेंट का खेल रहा था, ठीक है। आप पिछले मैच में देखें, आपने नवीन से नया बॉल करवाया तो उसने ऊपर से आपको आउट करके दिए। आज क्या प्रॉब्लम थी आपको कि आपने वो उस तरह का जो है ना माइंडसेट, या तो आप बिल्कुल ही बैकफुट पे थे, या फिर आपको लगता है कि ये भी पैनिक ही एक तरह से था कि पिछला मैच डिफेंड नहीं कर सके ड्यू की वजह से, तो अब वही पैनिक करके, जैसे इंडिया ने अपना बैटिंग ऑर्डर बदल दिया तो इन्होंने अपना डिसीजन ही बदल दिया पूरा टॉस के हिसाब। एक और ऐड कर लेना सवाल, नबी ने एक ओवर किया, करीम जन्नत ने एक ओवर किया, उस सवाल को इसमें भी मिला लेना। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें एक ओवर में 7 रन दिए, एक्सपीरियंस बॉलर थे नबी जो है, ठीक है बीच में आपको मार लग रही है। अगर नवीन को देखें तो 59 जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, हम पूरे टूर्नामेंट में बात कर रहे हैं। आज अगर आप देखें तो स्लो वन भी उन्होंने टांग पे किए, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बॉलर है, एक दिन आपका बैट है, लेकिन आपको वो कुछ लग नहीं रहा था कि वो कुछ करना चाह रहे हैं। मतलब लेंथ बॉल करी जा रहे हैं कि ठीक है, कोई होता है ना कि वो आपको वेरिएशन नज़र आती है, वहाँ आप से आपकी लाइन ख़राब हो जाए, आपको कुछ हो जाए तो एक समझ आती है। लेकिन वो यही था कि बस ठीक है जी, वो आए हैं तो जस्ट जाएं और खेलें, और ठीक है 200 होता है या 210 होता है या 220 होता है तो होने दें, कोई मसला नहीं है। जी थैंक यू वेरी मच। और उमर आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो खुशी हुई कि आज लगा है कि T20 के पिचेस बनाए गए दोनों मैचेस आईपीएल के में है। हाँ लग रहा था कि आज आईपीएल की तरह की क्रिकेट हो रही है, और खुशी हुई है क्योंकि लोग देखना चाहते थे T20 मैचेस, जो कि आज 200 हो गया, तो सबसे बड़ी तो ये बड़ी खुशी है। और मेरे ख्याल से जिस तरह अजहर भाई ने, राशिद भाई ने कहा कि अगर आप पहले से ये हमारे ओपिनियन हो सकता है, मैं भी उनकी अपनी थिंकिंग हो, लेकिन जो बाहर से जो लग रहा था कि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थे अफगानिस्तान के प्लेयर्स के, वो उस तरह नहीं लगता जिसके लिए वो मशहूर है कि जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो अंदर जाते हैं। फिर गलती की कि अगर आप फ्रेश पिच है और आप टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हो तो ठीक है, नबी ने ओवर किया, आपके पास 3-4 पेसर है, आप पेसर से ट्राई कर रहे हैं, ना कि आप एक नए बच्चे से आप बॉल करा रहे हैं, और वो गलती हो गई। फिर अगर आपको याद हो तो अगर नबी ने कहा कि हम देखना चाहते थे कि मैं भी बाद में ड्यू फैक्टर हो जाए, जिसकी वजह से विकेट भी अच्छे, तो हम ट्राई कर रहे थे कि पहले बॉलिंग करके बाद में ड्यू का नो। लेकिन अगर आपने सुना, और राशिद खान ने कहा कि मैं सेकंड बॉलिंग में ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे कोई जब ड्यू पड़ती है तो मैं ज़्यादा अच्छी बॉल करता हूँ, मेरा बॉल स्किट होता है। तो आज वो राशिद खान ने तो पहले ही बॉलिंग की, वो उसके लिए तो ड्यू के लिए वेट ही नहीं किया। तो आई थिंक कि ये कंसर्न होते हैं लोगों को, जो बाहर देखने वाले थे वो ज़्यादा इस चीज़ को फील कर रहे हैं। मे भी उनकी अपनी एक थिंकिंग हो, लेकिन जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की वो बताएं। ये अच्छी चीज़ है, ड्यू का वेट नहीं किया उन्होंने। Good luck summarising that, is what I can say. Yeah, I think I'll just keep it very brief. Afghanistan, they did not see the spirit of Afghanistan in today's game. The first thing they wanted to see was them to bat first, as they have been doing, because
India's batting was under pressure, so it would have put them more under pressure if they had to chase a target, a big target. And the second thing that they couldn't understand was why, if they chose to bowl first, why didn't they use the pace bowlers? I agree with that. Viv, what's your assessment? Because that last point actually is, even if you have one over from Mohammad Nabi, who does that a lot anyway, surely on a fresh pitch, as we said right at the start of the show, fresh pitch, when seam has of course trouble to batting lineups with that new ball throughout the tournament, why not Naveen and Hamid's overs 2, 3, 4, 5? Well, I can tell you from the start, I was pretty much surprised when Nabi won the toss and decided that he wasn't going to bat. That to me was rather surprising, especially what we would have seen in the tournament so far. They have always done well batting first. I cannot see why, in the end, when he spoke about the fact that there's Jew factor, when we would have all discussed before that they do enjoy bowling with a wetter ball at times, and very surprising. So they would have gotten India back in form, in my opinion. India had the best part of the wicket, and to be fair, they just played Afghanistan out of it. Simple as that. Yeah, they just played Afghanistan out of it, and from the discussion on the left wing, it seems as a surprise to everyone with the decision taken from the toss. Well, I think that's 1, 2, 3, 4 so far. Do you want to make it 5? I mean, look, the first thing is, the best pitch we have seen today. Because Indian are good when it's shiny, straighter, nothing in the pace, no moisture, no grass. So I think they wanted, definitely everybody, I mentioned yesterday, that everyone will try their best to bring India back into the tournament. So everybody tried their best. Bad decisions by Nabi. Why we were discussing that, why Afghanistan is dangerous side, because they have 3 very effective spinners. That Mujib is not playing, then I'm surprised to say Nabi bowled only 1 over. And then Rashid today was not on the spot. Bowling at the middle leg, consistently there, hitting the pads. So I think the effort which we always see, especially the passion of Afghanis, was missing. And India is one team, and if you see a batting page, to give them a batting, it means that you want India to come back in the game and this tournaments. So they're back. Would it be fair to say that the Afghanistan team had a bad night? Well, yeah, okay. I don't think that takes too much effort to say that. If you want to say any more than that, that would be very difficult. That would be quite tough. I mean, yes, teams do have off days. Yes, after the excitement of, say, the game against Pakistan, you can lose a bit of zest, maybe, but all these teams have days in between to prepare. The challenge of playing one of the great sides, India, and especially an Indian team when they were down. I mean, having lost 2, okay, everyone assumed that India would somehow come back, would find their mojo, would find a reason to play well, because they are a talented the type side. of pitch was there, and Mujib is not bowling with the new ball. I think without Mujib, this bowling lineup is not challenging to a top team. And also, I mean, the other thing, to be fair, I mean, as I say, who knows what lies behind all this, but to be fair, both Rahul and Rohit Sharma went at the bowling straight away. I mean, okay, we have a slow left armer, Shafaruddin, who hadn't played in the tournament until now, not in the Super 12. That's surprisingly why. So why he gets 2 overs at the start? Why didn't he use the pace? Yeah, exactly. I mean, I agree with that. But There they went at him. They went at him. Buts today. Yeah. The first time I've seen a lot of if and buts, bad decisions, bad options, because you have set format for your team. Batting first, putting some runs on the board, and bowling second, and defending the totals. And using Naveen as a new ball bowler, Indians can be a bit under pressure.
And why can't he use the seam ballers to take early wickets? and especially- Naveen is sorry, go, Yeah, hang on, yeah. let's let Viv go. And especially when you win the toss, we would have seen little patches of grass on the Yeah, yeah. track. You would expect to utilize that because every time you win the toss and you put someone in, you're expecting to make some early inroads. Right, I agree. And especially with the new ball. Naveen has won Man of the Match awards. Hamid Hassan has shown that he's got pace, all that pace that we hadn't seen for 4 or 5 years, this big gap in his career. But he's come, the games he's played in this tournament, he's bowled with fire. So yeah, I mean, I agree entirely. Those two guys should have been in there. No, they bowled 4 overs between them. Yeah, In the power play. After, I mean, Yes, yes, but that's what- after the Two first spinners. couple where the Yes. initiative had been taken away. That's what I'm saying. You know, like Rohit Sharma was struggling with the early on with the ball, you know, coming back to him, and Hamid is a guy who can bowl good Yorkers, and he bowled the 6 overs for 1 run, and he bowled, I think, the 4th overs for only 5 runs. So this, if you got a person like Hamid in your And bowling a first over to Rohit Sharma and Off ball, spinner. Full, atta- fast ball. attack the Could have stumps been a straight away. different Could have story. been a different story. You know, like if you got early 2 wickets, and then there might be a different ball game. Maybe some would say that Captain Nabi got it wrong today. I think a lot of people would say. You know, like Let me put it this way, I don't think you'd be alone in saying you can float it out there and see if, float it out on Twitter or something and see who agrees with you. See how many thousands, hundreds of thousands of likes you get for that idea. All right, well, that's right, yes. लेकिन Rashid. एक चीज देखें ना, पूरे टूर्नामेंट में हम चाह रहे थे रन हो, आज 200 रन हुए हैं तो हम अफगानिस्तान के पीछे पड़ गए। आकिब साहब आप बताएं, आज रोहित शर्मा अच्छा खेला, केएल राहुल खेले, पंत खेले, हार्दिक पांड्या अच्छा खेले। हम चाह रहे थे कि ऐसा मैच हो, जब 200 करते हैं आप पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन देखो बात ये है कि एक टीम है, उसकी एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेटजी है। अब अफगानिस्तान की क्यों हम स्ट्रेंथ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान वाहिद टीम है, ब्रेव डिसीजंस ले रही है, बैटिंग पहले कर रही है, सेकंड टाइम पे प्रेशर डाल रही है बड़ी टीमों के ऊपर। तो आज क्यों आपको जरूरत पड़ गई पहले आज अपने ऊपर प्रेशर अपने ऊपर प्रेशर डालने का? एंड यू नो दैट दे कैन नॉट चेज, दे आर मोर कंफर्टेबल डिफेंडिंग अ टोटल देन चेजिंग। और जितनी भी डिसीजंस हुए हैं, इफ यू हैव अ हामिद and you have seen Rohit Sharma struggling, full in, coming in, तो आपने उसको ओवर क्यों नहीं दिया? Why not? हाँ बिल्कुल सही है। So there और Nabi, the only 2 spinners, Rashid and Nabi, and he bowled what, only 1 over. इन सर्कल But having said all of that, right, let's take a look at the Indian batting. Regardless of whatever went on, I just believe that they played very well. Right, for a team that was struggling early on, for them, for the position that they were in, to amass over 200 runs, it was just special to see, if you enjoy watching good cricket. Absolutely. And we'll talk about that. We'll talk about Indian batting and how they have played well. पर हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद.